Good morning, everybody. So, we are again over here with our biology class from lesson tissue. As you have understood that we have already completed many types of plant tissue, out of which we have completed the simple permanent tissue. We have completed the meristematic tissue, and we are in a position to understand the various types of, as you can say, it is complex permanent tissue. Now, when we are talking that it is a complex permanent tissue, one thing is guaranteed that these tissue cells will have certain differentiated work, and the cells comprising of one complex permanent tissue will not be having only one kind of cell. It will have a variety of cells in difference of structure, origin, and will have a similar function. So in the case of complex permanent tissue, we are going to study about majorly two kinds of complex permanent tissue in plants. One of them is known as xylem and the other one is known as phloem. So let us try to understand what are these complex permanent tissue and learn about xylem and phloem one by one. Okay. So if we look into the definition of it, the complex tissue consists of more than one type of cells and all these cells coordinate, मतलब साथ में काम करते हैं, coordinate to perform a common function. For example, if we talk about xylem, there are four types or four components of cells present over there, but majorly they are helping in the functioning of water conduction only. These complex tissue majorly help in the transport of water, mineral salt, that is a nutrients, and food materials to various parts of the plant body. As we have discussed, it is basically having two types. One is xylem, the other is phloem. Xylem is also referred to as wood in general language and phloem as the bast fibers. Xylem and phloem are both conducting tissue, मतलब transportation में help करता है, and are also known to be as vascular tissue, मतलब इन दोनों को मिला के vascular tissue या फिर vascular bundle भी बोला जाता है. Together both of them constitute the vascular bundle. Do you understand that? Now let us come to the components of each one of them. So the xylem tissue that we are going to understand and the phloem tissue, if we cut out a transverse section of a tree, we will observe a circular section like this. We have did it in the last class also. आउटर लेयर को हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस बोलते थे, है ना. और जैसे जैसे हम इनर लेयर पे आते हैं, कॉर्टेक्स वगैरह को पूरी तरह से कवर करने के बाद, वी कम टू द इनर सर्कल. जो इनर मोस्ट सेल्स है उन्हें हम पिथ बोलते थे, PITH. नाउ कैन यू सी दिस स्मॉल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लाइक अ रिंग all around the circular inner circle of here. Now each of these ring, जो ये oval structure आपको दिख रहा है, एक जैसा structure दिखा रहा है, ये एक vascular bundle है. अगर ये एक vascular bundle है तो इसमें xylem भी होगा और phloem भी होगा. तो आप देख सकते हो जिसे मस्टर्ड कलर से लेबल करा गया है, जो थोड़ा आउटर साइड में है, that is known to be the phloem. And the one which is on the inner side of the white circle, that is the red color one, are to be denoted as the xylem. Now remember, is the transverse section. अगर इसे हमने longitudinally कट किया होता तो यही चीज़ आपको सिलेंडर के फॉर्म में दिखता. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, this diagram is showing the cylindrical structure of the same xylem through which water is going to move. यहाँ लिग्निन का मतलब है इसके सेल वॉल में लिग्निन भी प्रेजेंट है. Let us go beyond this. Now, in this PPT, in this slide, we are going to understand about the four different components of xylem. Xylem starts from four different components, out of which the two are common in xylem as well as phloem. The first component is known as xylem parenchyma. मतलब ये जो parenchyma tissue है, जो कि simple permanent tissue के parts होते हैं, this is only getting specialized and getting a part of xylem over here. Xylem parenchyma का major function होता है storage का. स्टोर करेगा वो फूड को, वाटर को. इसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प इन द हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ द वाटर. इट विल नॉट कंडक्ट वाटर इन द वर्टिकल पार्ट, बट इट विल ओनली हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ सम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंडक्शन.
When we talk about xylem fiber, it is very different from xylem parenchyma, because when we talk about parenchyma, we comparatively talk of thin walled cells which are living in nature. But जैसे ही हम xylem fibers की बात कर रहे हैं, we are talking about sclerenchymatous tissue which are having डेड सेल्स इन देम. तो ये जो जाइलम फाइबर्स हैं, इनका भी कंडक्शन में कोई भी रोल नहीं है, बल्कि ये क्या करेंगे, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे कि ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से बना है. द मेजर टू components which help in the water conduction in the case of xylem is trachea and vessel. Please try to understand all these four components together are only found in highly evolved angiosperm plants. Priorly, when xylem was not developed so much, for example in gymnosperm tree, जैसे कि जो हमारे पाइन के ट्रीज़ होते हैं, है ना, जो क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं, ये जो ट्रीज़ थे, इनके पास ये चारों कंपोनेंट अलग अलग मौजूद नहीं था, बल्कि it only had a complex cell in the form of trachea which was doing both the function. It was doing the function of water conduction also like vessel, as well as it was helping in providing strength to the plant also like fibers. तो क्योंकि वो दोनों काम एक साथ कर रहा था, so definitely in those plants the vascular bundle was not highly evolved. But as the vascular bundle evolved in the more modified gymnosperm or more modified angiosperm, what happened? These gymnosperm attained a great height because the cell of the xylem differentiated to form four components. चारों components के अलग अलग काम differentiate हो गए. ट्रेकीड और वेसल का काम सिर्फ वाटर के कंडक्शन में होने लगा, वो और किसी स्टोरेज में या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करने में कोई हेल्प नहीं कर रहे थे. सपोर्ट और स्ट्रेंथ का काम सिर्फ और सिर्फ जाइलम फाइबर्स को दिया गया और स्टोरेज का काम दिया गया जाइलम पैरेन्काइमा, बिकॉज दे डिफ्रेंशिएटेड सो वेल इन द हाईली इवॉल्व्ड जिम्नोस्पर्म. द जिम्नोस्पर्म अटेन्ड ग्रेट हाइट. आप देख पाओगे जो कोन के ट्रीज़ होते हैं, जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जाइलम और फ्लेम उसमें बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है. नाउ इफ़ यू वांट टू सी द डायग्राम ऑफ दिस कॉम्पोनेंट, this fiber you can see very thin structure like a sclerenchymatous tissue. ट्रेकीड भी अगर आप देखोगे तो इसके tapered ends ही present है, but as compared to fiber it is more thicker. These tracheids are having small pit-like structures on its body. ये वेसल्स है. वेसल यहाँ पे दो वेसल के मेंबर्स रखे गए हैं. अगर एक वेसल को देखोगे तो सिर्फ यहाँ तक है. These vessels are more thicker and smaller compared to the tracheids. वेसल के बॉडी के ऊपर पिट्स भी प्रेजेंट है, एज वेल एज इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको परफोरेशन प्लेट्स भी मिलेंगे जो वाटर का एक कंटिन्यूस कॉलम क्रिएट करने में हेल्प करता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट फ्लोएम एंड वी विल गो अबाउट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट xylem. Thank you so much.